the mosques were blaring at the same time, at the pitch of their voices, these slogans, these Azadi slogans and these edicts to Kashmiri Pandits to leave Kashmir. And they were blaring from all around, all over the mosques, and it was such a horrifying experience. Huge hordes of people shouting slogans, walking in the street, and it was dark. I could not see at that very moment whether anybody was carrying arms at that point of time or no. And I got scared, very honestly, very scared. I have been really as scared as I felt during that time. मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, बट आज एक काम करना है। उन्होंने उस टाइम मुझे 2 चाकू निकाल के दिए और मुझे ये बोला कि अगर ये मॉब यहाँ तक इस घर तक पहुँचता है, बिफोर द मॉब गेट्स यू, यू किल योरसेल्फ। It was the 19th of January 1990. The days were cold and nights bitter, though there was no snow on the ground. Around 9 p.m., loud and thunderous slogans of Allahu Akbar, Pakistan ka matlab kya, La ilaha illallah, Islam zindabad, Pakistan zindabad, raised collectively by a multitude of humans and relaying through deafening loudspeakers, pierced the eardrum. These slogans were not new to the Pandits of Kashmir. However, the odd hour, the tumultuous bang, the intriguing spontaneity besides the shrieking loudspeakers, all spoke threateningly that a storm was brewing over Kashmir. Suddenly, telephone bells began ringing loud in the houses of most of the Pandits in Srinagar. Mobile phones had not been introduced yet. Each caller on the other end of the line asked his relative, friend or acquaintance whether they were all right. This question carried more meaning underneath its simple words. The caller told his respondent to come out of his house in that dark and dreary night and see for himself. What a strange but alarming scene was unfolding on the streets and squares of the capital city of Srinagar. To recall those events, we had settled for dinner, and after we were watching television, and suddenly noises started coming from nearby areas, and in order to check, I went upstairs to the 3rd floor of my house. And I could make out that noises were coming from the nearby mosques. And once I started to decipher what exactly the slogans and the noises were, one could make out that there were religious slogans followed by Azadi and separatist songs. उस आवाज ने ऐसा वातावरण पैदा किया दहशत का, हमको लगा कि हम सुबह लोग हमें जीवित नहीं पाएंगे। 7-8 बजे तक होते होते ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जब मेरे फादर जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनको आइडिया तो था ये, एंड उस दिन लकीली वो बारामूला में थे। हमें उन्होंने खाना खा के बोला हमारे घर का थोड़ा एक रूम नीचे था, यू कैन से बेसमेंट था। हमें बोला कि आप लोग वहाँ सो जाना आज रात। People sat, squatted, danced, shook fists, made violent gesticulations as loudspeakers were fixed and microphones blurred a mix of Quranic verses, revolutionary songs, anti-India vitriolic speeches, and the supremacy of Islamic faith. Spirited stories of the heroes of early Islam were recounted to convey Islam's might of destroying non-believers. This rant continued till the wee hours. The message for the Kashmiri Pandits was clear. They were in the line of fire. All of us probably were 8-10 people. We
one corner of the room, opening up the window once in a while, hearing the noises and all that. So the noises were growing very similar and similar. Like frightened pigeons, they huddled up in their nests and kept vigil throughout the night. Not a single soul came out of their house. The night-long tirade against non-Muslims snatched whatever remnant of peace of mind that was left with them. And for the first time in the history of Kashmir, this open and unabashed tirade was let loose among them on such a massive scale. We also rang up police and security agencies, but they were unable to offer any kind of help or any kind of solution. And majority of the cases, the phones they did not pick up, and wherever they picked up, they said they couldn't offer any help, any succor to any of the Kashmiri Pandits on that particular horrifying night. The administration collapsed. Law and order were thrown to the wind. The police left their posts. The Hindus could not even muster the courage to come out to see their own close relatives. Their survival was hanging in the balance. Overnight, their Muslim neighbors changed color. Apparently, as if the Muslims had thrown off the mask they wore for centuries. In a few days, the entire atmosphere changed, and the Pandits came to be recognized as the other. The idea was, the intent was to kill Kashmiri Pandits, to frighten them, to cleanse Kashmir of Kashmiri Pandits who have been living in Kashmir for the last more than 5,000 years. The next morning, which was the 20th of January 1990, it was the rule of the mosque, the mullah, and the Islamists. Loudspeakers fixed on mosque tops blared uninterruptedly, cautioning the Pandits to leave Kashmir. The refrain of their slogans was, "We want our Kashmir without Pandit males, but with their women folk." This shameful and shocking slogan would shame every decent Muslim. कोई 20, 21 या 22 अप्रैल, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, मैं वापस आ रही थी स्कूल से अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो कुछ मुस्लिम लड़के थे वहां पे, उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया और मुझे कहा तुम तैयार रहना कि तुम्हें हमने कन्वर्ट करना है, हम तुम्हें मुसलमान बना देंगे और तुम्हारी शादी मुसलमान से करेंगे। घर जाके अपने फादर को ये बात बोल देना। It was on that particular day when Kashmiri Pandits in the morning decided that Kashmir was not the place that they could live any further, because it was not secure, it was not safe. There was such viciousness all around. Hate campaign carried forward through barbaric and inhuman violence struck fear among the entire Hindu community in Kashmir, to the extent that anybody prepared to show even the slightest goodwill to them was faced with a threat to life. Al-Safa, a local Urdu daily, minced no words in telling the Pandits to leave Kashmir within hours if they wanted to save their lives and honor. Loudspeakers fixed to mosque tops blared a profusion of warnings. We were given a 48-hour notice to quit or face death. When our leaders asked them that we wanted to live in peace and we wanted to know what's our status, one of the assistants of our All Kashmiri Pandit conference was killed, and along with that there was a note, "This
is the answer to your request. This was the last night in which the 5,000-year-old indigenous population of shy white Kashmiri Pandits spent together in their homeland. They had somehow braved the cataclysm of 8 centuries of Muslim autocratic rule, but alas, the decimation of this ancient and indigenous community happened under the benevolence of secular democratic India. Now, ours is a homeless community dispersed over all 4 corners of the world. The memories of that horrifying night just doesn't go away. And it was on that day the exodus finally materialized. We want to know from the government of state government and from the central government, is there a single person who has been so till today punished for the crimes perpetrated against Kashmiri Pandits? I have not forgotten my childhood, but yes, I have forgiven the people who made us homeless. Very honestly, now a little later, close to around now 30 years, I don't have any other option. We have learned things. And today I realized that it was a better choice for us, that eventually we came out of the valley. विस्थापन के बाद क्या कोशिश की होगी मैंने, कैसे मैंने फिर अपने टांगों पर जीना सीखा होगा, कैसे मेरे सामाजिक रिश्ते रहे होंगे इस इलाके में जहां मेरी भाषा नहीं बोली जाती थी। आहिस्ता 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 मेरे मरे हुए वजूद को फिर से जिंदगी मिलना शुरू हो गई। By the end of summer in 1990, nearly 4 lakh Kashmiri Hindus had left their homes, huts, orchards, lands, businesses, services, livestock, everything. In penury, they eked out a living in the burning cauldron of Jammu, some to be consumed by sunstrokes, some by the reptiles, and some by drowning in the canal. The Kashmir radicalized political leadership spread the rumor that the Pandits had not fled, but were enticed by Governor Jagmohan to leave Kashmir so that he could wreak vengeance on the Muslim population. Such are the vagaries of human nature. भारतवर्ष उत्सवों का देश है। वर्ष का हर दिन यहाँ एक उत्सव होता है। हर दिन देश के किसी न किसी कोने में यहाँ के निवासी जीवन के प्रवाह का जश्न मना रहे होते हैं। ये खुशी की तारीखें होती हैं, जीवन का आनंद उठाने की तारीखें होती हैं। ये तो हुई खुशी से भरपूर तारीखों की बात, पर हम बात करेंगे उन कातिल तारीखों की जो किसी भी देश में रहने वाले किसी भी समुदाय के लिए अत्यंत दुखद होती है। ये अपने ही लोगों की हत्याओं की तारीखें होती हैं जिन्हें याद करते हुए उन हत्याओं को फिर से जीना पड़ता है। हथियारों की चुभन अपने सीने में महसूस करनी पड़ती है। अपने ही भीतर घाव खुलते हैं और उनसे बहते हुए खून को महसूस करना पड़ता है। उन आंसुओं को फिर से बहाना पड़ता है अपने ही चेहरे पे जो उन हत्याओं पर बहे, और सूखने के बाद उन आंसुओं का जो नमक चेहरे पे चुभता रहा, उस चुभन को भी फिर से सहन करना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हमारे देश के 42वें वर्ष की कातिल तारीखों की कहानी सिर्फ चेहरों पर चुभते हुए आंसुओं के नमक की कहानी नहीं है।
ये जहादी आतताइयों के उस षड्यंत्र की कहानी है जिसका आधार ही एक मारो 10 डराओ का सिद्धांत है। ये कश्मीरी हिंदुओं के एक हत्या से 10 को डराने, 10 की हत्याओं से हजारों को डराने और फिर लाखों लोगों को उस तारीख यानी 19 जनवरी तक पहुंचाने की कहानी है, जो स्वतंत्र भारत के नागरिक देश प्रेमी कश्मीरी हिंदुओं की अपनी ही जन्मभूमि से निष्कासन की तारीख है। ये उन तारीखों की कहानी है जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को निष्कासन की उस तारीख तक पहुंचा दिया और आज अपनी जन्मभूमि से अलग वे संसार के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। वो कदम कदम पर जोखिम का दौर था। कश्मीर की गली गली में जलसों और जुलूसों का दौर था। काफिर मुल्क हिंदुस्तान से अलग होकर निजाम मुस्तफ़ा वाला राज्य स्थापित करने का आह्वान करने वाले नारों का दौर था, जिनके बीच दबी दबी सी 14 सितंबर 1999 की तारीख आई। ये वो तारीख थी जिस दिन भारत की सरकार के कामकाज के लिए हिंदी भाषा को चुना गया था। समूचे देश में उस दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। उस भाषा, उस जुबान का दिवस जिससे भारत के लोग प्यार करते हैं, जुबान का जश्न मनाने वाले इस तारीख के दिन ही कश्मीरी हिंदुओं की जुबान बंद करने की शुरुआत की गई। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चिंकराल मोहल्ला इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कश्मीरी हिंदुओं के प्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित टिकालाल टिपलू की गोलियों से छलनी कर दिया गया। वे एक प्रमुख वकील थे और अनेक हिंदू और मुसलमानों के केस उन्होंने मुफ्त लड़े थे। इसी की याद रखते हुए इलाके के मुसलमान दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी, पर दुकानें कुछ ही देर बाद खोलनी पड़ गई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आतंकियों का फरमान आ गया कि काफिर के कत्ल पर दुकान बंद रखने का नतीजा ठीक नहीं होगा। पंडित टिकालाल टिपलू को पूरे देश के हिंदू जानते थे। कश्मीर के हिंदुओं में डर के बीज बोने के लिए उनकी हत्या से बेहतर कोई रणनीति हो ही नहीं सकती थी। उनकी शव यात्रा पर पथराव किया गया और जो हिंदू लड़के उनकी शव यात्रा में आगे आगे थे, बाद में उनको भी धमकियां दी गई। कश्मीरी हिंदू समझ गए कि घाटी में बने रहना अब उनके लिए आसान नहीं था। कुछ तारीखें शांति से गुजर गई। आतंकी अंदाजा लगा रहे थे कि पंडित टिकालाल टिपलू की हत्या का क्या और कितना असर हुआ है। कश्मीरी हिंदू राहत की सांस ले ही रहे थे कि 4 अक्टूबर 1999 को न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की श्रीनगर में हत्या कर दी गई। न्यायमूर्ति गंजू भूतपूर्व सेशन जज थे, जिन्होंने एक गुप्तचर अधिकारी अमरचंद के हत्यारे मकबूल भट्ट को मृत्यु दंड दिया था। मकबूल भट्ट आतंकवादी संगठन जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था। हत्या से पहले अनेक बार उनके घर पर बम फेंके जा चुके थे। जज गंजू की हत्या दिन दहाड़े की गई और उनके मृत शरीर पर एक संदेश रख दिया गया कि लाश को उठाने वाले को खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। हत्या करने के बाद हिंदुओं के मृत शरीर को पुलिस के आने तक उठाने न देने के पीछे रणनीति यह थी कि अधिक से अधिक लोगों को लाशें देखने की आदत हो जाती है, उनकी संवेदनाएं मर जाती है और आतंक तो फैलता ही है। यहां इस बात पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि आतंकी मकबूल भट्ट को जिन 22 गवाहों की गवाही के आधार पर जज गंजू ने मौत की सजा सुनाई थी, वो सब मुसलमान थे। उनमें से एक को भी आतंकियों ने छुआ तक नहीं। यहां तक कि जस्टिस गंजू द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बरकरार रखा था, वो भी मुसलमान था। उसे भी खरोच तक नहीं पहुंचाई गई। संदेश यही था, कुछ भी हो मारा हिंदू को ही जाएगा। न्यायपालिका के लिए भी ये संदेश था कि आतंकियों को सजा दे दी तो खैर नहीं। तारीखें गुजरती रही और आतंक का नया संदेश लेकर आई 31 अक्टूबर 1999 की तारीख। डलहसन यार्ड श्रीनगर में रहने वाली गृहिणी श्रीमती शीला टिक्कू शिवपुरा में अपने भाई से मिलकर आ रही थी। हब्बा कदल के पुल पर आतंकियों ने बंदूक का परीक्षण करने के बहाने उन पर गोलियां दाग दी। टैक्सी वालों ने अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। फोन करने के बावजूद एसएमएचएस अस्पताल की एम्बुलेंस नहीं आई। श्रीमती टिक्कू को रेडी पे डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वही हुआ जो होता आया था, वे चल बसी। आतंकियों ने संदेश दे दिया था कि हिंदू औरतों पर भी कोई रहम नहीं किया जाएगा। आज़ादी और निज़ाम मुस्तफ़ा की इच्छा प्रकट करने वाले जुलूसों से लबालब बड़े दिन गुजरते रहे और तब आई 1 दिसंबर 1999 की तारीख। श्रीनगर में श्री अजय कपूर की हत्या कर दी गई। वह खत्री व्यापारी थे और उन्होंने अपने घर वालों से वचन ले रखा था कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी अस्थियां हरिद्वार न
ले जाकर कश्मीर की वितस्ता नदी में ही प्रवाहित कर दी जाए। श्री कपूर हमेशा तिलक लगाकर दुकान पर बैठते थे। यही तिलक आतंकियों की आंख की किरकिरी बन गया। गोलियों से छलनी उनके मृत शरीर को भी घंटों किसी ने नहीं उठाया। हिंदू कश्मीर छोड़ने के लिए सामान बांधने लगे थे, पर अभी भी विश्वास था कि सरकार कुछ करेगी। पर कातिल तारीखों का अंत कहां होने वाला था। 9 दिसंबर 1999 को विचारनाथ तीर्थ के वृद्ध महंत केशवनाथ पंडित की हत्या तीर्थ पर ही तैनात 616 नंबर वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ ने की। मोहम्मद यूसुफ जमात इस्लामी मानसिकता का था। उसने केशवनाथ जी का जनेऊ काट डाला और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। उस वृद्ध को यातनाएं दी। महंत नहीं माने तो बंदूक के कुंडे से उनका सिर फोड़कर उनकी हत्या कर दी। जमात इस्लामी के लोग पुलिस में भी घुस चुके थे। हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं था। 27 दिसंबर 1999 को दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के हिंदुओं को भी पता चल गया कि ये वह सुरक्षित नहीं है। अनंतनाग के नामी वकील और बुद्धिजीवी पंडित प्रेमनाथ भट्ट के घर में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पंडित टिकलाल टिपलू की तरह ही वह भी हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में लोकप्रिय थे, पर 3.5 महीने में हवा बिल्कुल बदल चुकी थी। पंडित टिकलाल टिपलू की हत्या पर मुसलमानों ने शोक मनाया था, पर पंडित प्रेमनाथ भट्ट की हत्या पर उनकी गली के मुसलमानों ने ही कहा था, लो भाई एक और गिरा। बहुसंख्यक पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए थे। नया वर्ष 1990 कातिल तारीखों की आशंका के साथ ही आया। 15 जनवरी 1990 को खनमू के एक सरकारी कर्मचारी श्री ML भान की हत्या कर दी गई। इसी दिन लाल चौक से श्री बलदेव राज दत्त का अपहरण कर दिया गया। 4 दिन बाद यानी 19 जनवरी 1990 को श्री दत्ता का मृत शरीर यातना के अनेक निशानों के साथ श्रीनगर के नई सड़क क्षेत्र में मिला। और इसी 19 जनवरी की रात कश्मीर घाटी की हर मस्जिद से गूंजते हुए नारों के माध्यम से जहादी संदेशों से भर गई कि ए काफिरो ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। ये शुक्रवार का दिन था, जुम्मा का पवित्र दिन, जिसका इस्तेमाल काफिरों को खदेड़ने के लिए किया गया। विडंबना यह है कि दूरदर्शन पर राष्ट्रीय एकता का संदेश देती हुई फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता प्रसारित हो रही थी, जिसकी आवाज़ बंद करके सिर्फ चलती हुई तस्वीरें देखते हुए अधिकांश कश्मीरी हिंदू घर छोड़कर जाने के लिए सामान बांध रहे थे। अनेक कातिल तारीखों के बाद कश्मीरी हिंदू 19 जनवरी की तारीख तक पहुंचे थे, जो उनके निष्कासन की तारीख बन गई थी। इन कातिल तारीखों की कहानी इस प्रार्थना के साथ कही गई कि दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसी तारीखें ना आए जो उसे उजड़ने की तारीख तक ले जाए। इस उम्मीद से कही गई कि दुनिया में किसी भी समुदाय को अपने लोगों की हत्याओं की कहानियां न कहनी पड़े, कि जिंदगी की कहानियां बची रहे, उजड़ने की नहीं, बसने और बसे रहने की कहानियां बची रहे।